गुड इवनिंग। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो बाय वैल और बाय रेफ होता है, इसमें एक दफा बस इनका सिंटेक्स देख लेते हैं। सो सिंटेक्स इज अ बिट डिफरेंट। सो प्रोसीजर में यू डू नॉट कॉल, सॉरी फंक्शन में यू डू नॉट राइट कॉल, यू राइट द वेरिएबल नेम, और इसमें आपकी फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होती है। प्रोसीजर में यू राइट कॉल। रिटर्न का मतलब ये होता है कि इट विल एक्चुअली जस्ट टर्मिनेट द होल फंक्शन दैट्स रनिंग। लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स की हमने बात कर ली थी। ओके, बाय वैल और बाय रेफरेंस के लिए विल नीड टू गो इनटू पाइथन। सो मैं आई थिंक थोड़ा सा ब्रीफली पहले बताया था। So by val में होता है कि you pass a copy of the value that is sent as an argument, and then the original argument is not changed in the module that is passed as the. ठीक, so इसकी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स गो विद डाइस रोल। हम कहते हैं डाइस रोल में आपके पास एक रेंज जाएगी, ठीक है, 1 से कर लेते हैं एंड तक। ठीक है, so whatever the range is, you will generate a random number. So ignore the Python syntax, और इस पे हम कर लेते हैं print random 1 comma 10. Okay, so I'm creating a variable gold. इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी and we will print gold. Then when I call dice roll, it should output. Let's say I say dice roll should be between 1 to 6, so I pass in 6. Okay, it says 5, 4, 6, 5. ठीक है, it's working fine. So this is the main program जो function की body के बाहर है. Alright, अब by val और by ref में क्या होगा? So let's say ये जो आपकी जो range है, let's call it nd, और end जो ये 6 है, और यहाँ पे मैं end pass कर दूंगा. ठीक है, now what's going to happen is कि जो आपका end है ये यहाँ पे copy होगा, and then the value in end which is 6 will get copied here. So ये वाला end जो parameter में, so this is called the parameter, and then this is called the argument. Argument is the actual value that you send in. So this argument has no link with the parameter now. Okay, इसका proof क्या है? इसका proof ये है कि if I change end is equal to -99 inside, so technically अगर आप कोड देखो तो you can claim कि यहाँ पे अगर end की वैल्यू हमने -99 की है, तो after the dice roll the same value of end should also be -99. So let's check. Initially end की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, and after the dice roll will print the after value of end. Okay, let's run it. ये देखो आपके पास end is equal to 6 है। इनिशियल पे आपने किया तो इनिशियल वैल्यू 6 है, इनिशियल 6, then you called dice roll, we went to dice roll, we copy the value into end, so 6 is copied into end. आपका 1 to 6 dice roll होता है, you said it's 2, and then we are setting minus n to -99, and then we print the value rolled, and once we come back to line 11 और उसके बाद line 12 पे जाते हैं, तो जब हम n की वैल्यू दोबारा प्रिंट करते हैं, it still is 6, even though we explicitly set it to -99 here. या इसको कर लेते हैं in module, और यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट भी कर लेते हैं. Let's run it again. So initial is 6, module में -99 हुई, और after the module ends it's still 6. So this is the idea of BYVAL, that you will just copy the value into the parameter, और उसके बाद जो भी parameter का नाम है it has no link whatsoever. So by default आपकी जो values ये parameters है ना, ये by val ही pass हो रही है, so you don't even need to write it. Okay, so ये by val हमने जो है वो पढ़ ली, यही by default होता है. Okay, अब by ref में क्या होता है कि you pass the memory address of the variable in the argument. Any changes made to the variable are reflected in the subsequent parts of the program. Okay, so how do you do this? Okay, इसके लिए we will make an array in Python. So arrays जो होती है ना वो by default आपकी by reference आती है. So in fact this is what's writing. Arrays are always passed by reference. ठीक है, जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे उसने array पास करने को बोला हुआ जो कि बहुत रेयर होता है, so you have to make sure that you pass it by reference. Okay, how does it work? So I'll get rid of this program, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. ओके, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना कुछ वैल्यूज हैं. सो वैल्यूज, और वैल्यूज जो है वो पुराने डाइस रोल्स हैं. तो एक 6 था, एक 3 था, एक 2 था, एक 5 था, और एक 1 था.
ठीक है. Now I pass in this array into my dice roll, and then I capture it above, and then I'm going to change a value. So मैं कहता हूँ values का जो index 0 पे जैसे 6 पड़ा हुआ था ना, make it -99, and then we'll do the same. We'll print the value of array before. We'll print all the dice rolls before. Then so यहाँ पे कर लेते हैं before the function call, procedure call, and then we do it after. Now by ref में again आप लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा कि by ref में it's going to actually update the value throughout the program. So यहाँ पे अगर if you guys see when we print the value array, so यहाँ पे 6 5 3 2 5 1 आ गया. Then I call dice roll with the array. So array यहाँ पे copy होती है, and since it is passed by reference, so when you say कि 0th index में -99 आ जाए, तो it will actually put in -99 here in the memory, override कर देगा, and once you come back on line 11, so then the value 6 is gone and it has switched to -99. This is the idea. ठीक है. So यहाँ पे ये BYREF का concept है कि अब अच्छा secondly one thing worth noticing is कि इनके names जो हैं different हो सकते हैं. So let's say if I change the name to इसको मैं values की जगह कर देता हूँ array my array, and then if I still change this to my array, it will update the values array regardless, because again आप values को copy नहीं कर रहे, ये values जिस address पे पड़ी हुई है वो address आप pass कर रहे हो, so regardless of the name they will get updated. Let's look at the example report. A small number of very good answers, but very many less focused approaches which struggle to capture any element of the flowchart. Many solutions lacked any nested structure. ठीक है, so आप तीनों पे भी apply हो रहा है. Unterminated clauses, interleaved rather than nested clauses. So again ये भी apply होता है. Use of jumps to exit a pseudocode block, like end procedure and break, ये allowed नहीं है. Break. Incorrect use of get stacked, including call और इसको flag में assign किया हुआ है. And yeah, that's pretty much it. See, तो ये challenging question था. Okay, how do we go about this? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये एक main loop है और ये एक आपके पास inner loop है. ठीक है. You are setting port to 1, you are making it run till 4. So ये तो आपका simple एक 1 to 4 for loop आता है. ठीक है. ये पूरा जो process है आपका, इस पे मैं line कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला जो process है. So let's call it process 1. ये आपका 4 times repeat हो गया. ठीक है. So if you look at the marking scheme, there are two ways of doing it. एक तो while loop के साथ है, एक repeat until के साथ है. So let's go with repeat until. So repeat until में पहले आपने flag के अंदर value get की, ठीक है, आपने function call लेके get stack का, and then you are checking if the flag is not equal to true. So हमने ये वाली condition यहाँ पे लिखी है. Then you set port to 1. And port to 1 के अगर जब तक port 4 नहीं हो जाता तब तक आप इसको repeat करते रहते हैं. So for loop है basically. But you guys confused it for a simple if condition. ये देखो port is equal to 4, and then आप अगर तो ये no है तो देखो port plus 1 हो रहा है, फिर आप वापस जा रहे हो, is port equal to 4 no, फिर port plus 1 हो रहा है, right? So यहाँ पे clearly for loop आपको नजर आ रहा है. So यहाँ पे एक for loop लगता है 1 2 3 का, because आपने 4 पे आके खत्म कर देना इसे. तो यहाँ पे आपने कॉल किया reset port को, so ये वाला part you call the reset port, and then you move on to the next iteration. वो already यहाँ पे हो रहा है port is equal to 4 plus 1 पे. Okay, once this loop ends, अब क्या होगा? So is port equal to 4 now? Yes. यहाँ से will go back all the way up to the first call. So यहाँ से क्या होगा? End if होगा until flag is equal to true. So since it's not true yet, तो अब आपका function दोबारा से call होगा and then it will keep on repeating. So while loop में क्या है? While loop में first we get this function call, then we check while flag is not equal to true. Again वही वाली logic. फिर आपने एक for loop लगा लिया, उसके बाद आपने दोबारा से flag को call करना है, because जब port आपका 4 के equal हो जाएगा, then you have to redo it. So you call it again, and then this keeps on repeating until you get false. ठीक है, समझ आया? So ये जब भी आपका arrow वापस ऊपर जाएगा, तो that is a hint for a loop. That is clearly loop. So ये भी loop था और ये भी loop था. And since they both connected, तो यहाँ पे nested loop हो जाना था, क्योंकि जब तक आपका port 4 नहीं होता तब तक आपने इसके अंदर port की value increase करते रहना. Okay, let's do this one. ये भी procedure function वाला. Again we are doing 2024 paper 2. अब इसमें दो syntax errors है. Syntax errors are the errors in the
structure of your code, in the syntax of your code, that the way the code is written. So syntax basically means the way of writing something. So जैसे हम English की बात करें, so if I write a sentence, the apple tree is dot. So this is syntactically correct. Incorrect. It means it doesn't make any sense in English. Similarly, अगर हम pseudocode की बात करें, तो pseudocode में भी जो rules होते हैं आप लोगों को already पता है. इसी तरह, so let's say if I write if x is less than 0 and then end case, तो ये x triple less than 0 ये भी एक mistake है, और end case ये भी एक syntax mistake है. ठीक है. So now keeping this in mind, अब आप लोगों को याद आ गया. So there are two syntax errors here and one other error here. It could be a logical error as well कि आपकी program की implementation ठीक नहीं है. So yes, how do we go about this? Okay, to do such a question, always put in some random value. जैसे यहाँ पे अब label parameter है ना, तो ठीक है ना. So सबसे पहले आपके पास ये error आ गया next वाला. So it should be that it should be and while. So we have one error, syntax error, one is in next index, और आपने इसके साथ इसका सुनो करेक्शन भी दे दो. सो करेक्शन जो है वेल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ. क्वेश्चन में इसमें कहा हुआ ये शुड रिप्लेस विद एडिट. देन द नेक्स्ट वन, इंडेक्स इज सेट एज एन इंटीजर, सो यू कैन नॉट concatenate it. अगर आप इसको concatenate करना है तो it must have been wrapped inside a string to no. So यहाँ इसको भी लिख लेते हैं. So अगर is and index n%, and then the correction should be, again correction is not part of the question, the correction should be, it should be wrapped in string to the num to string index. Okay, good enough. Now there is one other error here. The first element has the index value 0. ठीक है. And look at the case of किससे शुरू हो रहा है, तो इसमें error क्या है? That is a logical error. So again आपकी जो array है वो यहाँ पे 0 1, वो कह रहे हैं कि जो डेटा array है उसमें इस तरह values पड़ेंगे. So you're starting at index 0, then 1, then 2, then 3. Element is at index 1. So index 0 से start नहीं करें. So this should be replaced by 1 and this should be replaced by 2. ठीक है. Good. Now we're saying the statement, which statement is not needed. ये वाला जो part है ना, part 2. They're saying there is a statement that is not needed to be there. So which should be that. So value taken a modulus with 2 will all 4 3 2 1 0. अगर आप 10 से कर रहे हो तो the remainders would be 9 8 से लेके 0.